आने के लिए प्रभु ने दिया क्या है, क्या ये हृदय और बेशुद्ध निवाह करेंगे। परमेश्वर हमारे जिनमें क्या भलाई के हेतु हम परमेश्वर कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हमारे ओठों का बलि धन्यवाद परमेश्वर के सन्मुख में चढ़ाना है। आइए हृदय और बेशुद्ध धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसराइल के स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में भी उतर कर आया है। हमारे स्तुति को स्वीकार करने के लिए प्रभु उतर कर आए हैं। हमारे मन लगा कर प्रभु को स्तुति करते रहे, थोड़ा समय स्तुति आराधना करते रहे। पराक प्रवेश उधर सारी बताओ उधर बीच दरबार 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 प्रवेश थारी बार दरबार रावाद दरबार 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 लो महाराज दरबार प्रवेश जला बेच गला बेच गला बे नमस्कार करके लो आत्मा की प्रार्थना आज सुबह के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय तेरी आराधना करने के लिए हमारे जिनमें दिया हुआ मौका के लिए धन्यवाद देते हैं। देवा आजादी के लिए धन्यवाद देते हैं। देवा तंदुरुस्ती के लिए धन्यवाद देते हैं। देवा सारी सुविधाओं के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज का दिन तेरा है, तेरा नाम हमारे बीच में ऊंचा होने पाए। यहोवा का सारे सृष्टि में तेरा नाम ऊंचा होने के समय में आज परमेश्वर हमारे ओठों खोल कर तेरे स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए तो मैं सहायक प्रभु जी, तेरे सानिध्य को रोकने वाला कोई व्यवस्था हमारे बीच में ना होने पाए। यीशु मसीह नाम मानते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। इंग्लिश नंबर 44 पेज नंबर 33। इंग्लिश नंबर 44 पेज नंबर 33। When the trumpet of the Lord shall sound. English number 44 page number 33. Trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks early, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the
पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे, पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करेंगे, विश्व के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, इंडिया के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, गुजरात के लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, कच्छ के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, गांधीधाम के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, हमारे चर्च के सारे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे, हमारे पास्टर को याद करके धन्यवाद करेंगे, साथी सेवकों को याद करके धन्यवाद करेंगे, ब्रांच मंडलियों के विश्वासियों के याद का धन्यवाद करेंगे, आज आए हुए नए लोगों को याद करके परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के सानिध्य के लिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर देवल आजादी के लिए परमेश्वर धन्यवाद, आराधना के लायक वातावरण प्रभु ने दिया इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, आराधना करने के लिए साथी भाइयों को, बहनों को और बच्चों को परमेश्वर आज इकट्ठा किया इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। आज का दिन परमेश्वर का दिन है, विश्व के भिन्न भिन्न भाग में परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करने के समय उनके संग मिलकर हमें भी आराधना करने के लिए परमेश्वर दिया क्या है, लिहाजा परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। अनेक लोग हमारे बीमार में पड़े हैं, कई लोग बुखार का कारण और कई लोग कई कमजोरी का कारण आज नहीं आ पाया। इन सारे प्यारों को परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर पूरी तरह के स्वस्थ करने के लिए आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे।
Praise the Lord, 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 praise the Lord. सर्वाधिपति चतुर्नाक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाइयों के सेट में, बहनों के सेट में बराबर अभी से लाइन में बैठ जाइए। कई जगह बीच में खाली पड़ी है, बराबर अभी से लाइन में बैठ जाइए। बाद में खड़ा होकर आगे आओ पीछे आओ करके बोलने की जरूरत नहीं है, आते ही बराबर लाइन में बैठ जाइए। भाइयों के सेट में बहुत जगह बीच में खाली पड़ी है, बहनों के सेट में भी बराबर लाइन से नहीं बैठे, बराबर लाइन से बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मंडली में पवित्र आत्मा कार्य जिस प्रकार करना है, पहले सदी के मंडली में जिस पर परमेश्वर की आत्मा कार्य किया, वैसे परमेश्वर की आत्मा कार्य करने के लिए आइए सभी लोग समर्पण कर प्रार्थना करिए। तो सहा करके हम तेरे से प्रार्थना सर्वाधि परमेश जमा करके लिए तेरे से प्रार्थना लोवा तेरे वाचा करके लिए प्रार्थना यावत परमेश आवाज़ कृपा वाले के तेरे वाले अब तो कार्य करके लिए तेरे से प्रार्थना करते हैं हम तेरे से प्रार्थना करते तारे चटक तक दावा ये जगह या बंदर वे तेरे साथ देख रहे हम तेरे से प्रार्थना करते रोशद बार तेरे साथ मां देख रहा बंदर वे चमा करके ले ओ आके साथ पर वे चमा करके प्रार्थना तरवादी पर वे चमा करके ले लो वा चमा करके ले तेरे से प्रार्थना आ करवा तेरे साथ वे चमा करके ले यो वा करके ले तेरे से प्रार्थना आज पर वे चंद्र सारे वे चमार देने के लिए हम धरे तो प्रार्थना हिंदी में गीत गाएंगे 163 पेज नंबर 134 163 पेज नंबर 134 सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान। सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु। सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु। आप लोग मृत्यु पर जयवंत हुआ, साव के रात सब मिटा दिया है। आप लोग मृत्यु पर जय
सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु हर जुबानी को करेगा कबूल हर घुटना टेकेगा सामने रो हर जुबानी को करेगा कबूल हर घुटना टेकेगा सामने रो हालेलुया 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 सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु राजाधिराज होकर राज करेगा उसके साथ हम सभी राज करेंगे राजाधिराज होकर राज करेगा उसके साथ हम सभी राज करेंगे हालेलुया 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 सर्वाधिकारी हालेलुया 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 सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु बंदियों को यीशु ने किया है आजाद तेरे उद्धार के लिए यीशु दिया अपनी जान बंदियों को यीशु ने किया है शक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु राजाधिराज होकर राज करेगा उसके साथ हम सभी राज करेंगे राजाधिराज होकर राज करेगा उसके साथ हम सभी राज करेंगे हालेलुया 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 सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु सर्वाधिकारी सर्वशक्तिमान है सर्वाधिपति मेरा प्यारा प्रभु पृथ्वी और अधोलोक में सर्वाधिकारियों पर सदा रहेगा पृथ्वी और अधोलोक में
Requested to please stand up. आप सभी लोग दया कर कर खड़े हो जाइए। सभी लोग दया करके खड़े हो जाइए। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टैंड अप। और थोड़ा से आगे भी आइए। नेक्स्ट गीत गाने के पहले खास एक विषय के लिए हम सभी लोग जोर से प्रार्थना करना है। More than 300 churches are now closed. Many pastors are in jail and believe wandering here and there without any shelter. 300 से अधिक चर्चेस बंद किया गया है। अनेक पास्टरों को जेल में डाला गया है। अनेक विश्वासियों सहारा बिना बेसहारा इधर उधर भटकते रहते हैं। वो हमारे से भाइयों हैं और बहनों हैं। हम उसके लिए खास तौर से प्रार्थना के लिए जवाबदार है। सभी लोग बराबर आंख बंद करके जितना जोर से प्रार्थना कर सकते हैं बराबर मन लगाकर प्रार्थना करिए। सभी लोग जोर से प्रार्थना करिए। तू सहा करके तरह से प्रार्थना शातु गर्भे चुद कार्य करके बादे त्रिपट लगोड करतावे मतलब वरण बे तो प्रार्थना प्रार्थना लोहा के सारे वर्बे वाड़
तेरे सारे रावत वर्वे जड़ वाड़े जड़ नोवा तो काट कर गले तरत प्रात करता प्रात रात प्रात हवा रेड वाट इधर बचा कर वे तो प्रात रेडा रेडा तारे टिकट बदावत तक गले प्रात रात युवता विदर वाट पर बे चत पहुंचा ले तेरा सारे बताव उधर बेच मान बताव उधर बेच बड़ा बागड़ बाड़ 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 लो वात कार्य कर गले प्रात करता जीवा दिवर बेच गवा देरवा लो वात सागर गले प्रात प्रभा राग पर बेच कार्य गले प्रात करता प्रभा दिवर बेच सागर गले हम धर तो प्रात लो वात कार्य गले इधर जवा दिवर बेच वाकर गले जीवा दिगता उधर बेच वाकर गले इधर प्रात प्रभा नदरवा लो तारी टिकट दावत लो वात कार कर दरबार बदावन दरवे जमा कर गले प्राक पर वे जमा कर गले हम दर तो प्रात्र वादाचारी द्रवत्तर वादाचारी द्रवादार यो हाथ वाद कर गले इधर से प्रात्र दा पर वे चतर चारि दावत वे जमा कर गले लो वात कार्य कर गले हम दर तो प्रात्र हालेलुया। हिंदी में गीत गाएंगे 197 पेज नंबर 151 197 पेज नंबर 151 जयकार जय जयकार। जय जयकार जय जयकार करे जय जयकार करे ओरे हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता
સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, તમારો આભાર માની સ્તુતિ કરી છે રાજા. આખું અઠવાડિયું સંભાળ રક્ષા કરીને પ્રભુજી આજે સવારના સમયે તમારા પવિત્ર ચરણોમાં આવવાને માટે અમને દયા કરી ધન્યવાદ પ્રભુજી. અમે લાયક ન હતા પ્રભુજી, અમે યોગ્ય ન હતા પ્રભુજી. તમે અમને પ્રેમ કરીને તમારા ચરણોમાં લઈ આવ્યા, ધન્યવાદ હો પ્રભુજી. થોડો સમય પ્રભુજી બેસવાને માટે અમને સહાયતા કરો પ્રભુજી. દુનિયામાં ઘણા માણસો સમસ્યા કષ્ટ ઉઠાવી રહ્યા છે પ્રભુજી, પણ તમારી દયાને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી. આજે અમે તમારી વાણી સાંભળવાને માટે આવ્યા છે, તમારા જીવતા શબ્દોને સાંભળવાને માટે આવ્યા છે પ્રભુજી. તમે અમને બોલો પ્રભુજી. મહાન દાસોને તમારા ચરણમાં સોંપો છો. ડબલ ગણા સામર્થ્યથી ભરપૂર કરીને પ્રભુજી તમે તેનો ઉપયોગ કરો પ્રભુજી. તેઓના મુખમાંથી નીકળનારા શબ્દો શાંતિવાળા શબ્દો બને, તેઓના મુખમાંથી નીકળનારા શબ્દો છુટકારા રૂપી શબ્દો બને પ્રભુજી માટે પ્રાર્થના કરે છે. આવેલ હરેકને તમારા ચરણમાં સોંપો છો. કયા બોજ સમસ્યા કષ્ટ સાથે આવ્યા છે પ્રભુ તમે જાણો છો. આજે તેઓની સાથે તમે વાત કરો. વચનમાં લખ્યું છે, બોજથી લદાયેલાઓ તમે મારી પાસે આવો, હું તમને વિશ્રામ આપીશ. એ શાંતિ એ વિશ્રામ આજે વચન દ્વારા તમે મોકલો. ખાસ કરીને નવા આત્માને તમારા ચરણમાં સોંપો છો. તેઓની સાથે તમે વાત કરો, તેને તસલ્લી આપો પ્રભુજી. બીમારી સાથે આવ્યા છે, બીમારીને કારણ નથી આવ્યા, હરેકને તમારા ચરણમાં સોંપો છો. તમારા વિંધાયેલા હાથથી ટચ કરો પ્રભુજી. હરેકને છૂઈને સંપૂર્ણ ચંગાઈ દેવાને માટે પ્રાર્થના કરો છું. દયા કરો. આ મીટિંગને તમારા ચરણમાં સોંપો છો. સર્વથી અંત સુધી પવિત્ર આત્મા તમે ચલાવો. તમારા ચરણમાં સોંપાતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નામમાં સાંભળો, માન્ય કરો પિતા. Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb, and shall I fear to own his cause, or blessed to speak his name? In the name, the precious name of him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. After my trust in thee, must I be carried to the sky on flowery beds of thee. While others fought to win the praise, I sailed through bloody sea. In the name, the precious name of him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. My cross may be. Are there no force for me to face? Must I not stand the flesh? Is this
why were dear friend to grace to help me on to God. In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. Whatever my cross may be, since I must fight if I would read. In grace my courage, Lord, I'll bear the toil, endure the pain, supported by thy word. In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I win the promised crown. Whatever my cross may be. In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I win the promised ground. Whatever my cross may be. All those who know ABCD can sing this song. जिनको ABCD आता है वो ये गाना गा सकते हैं। So I request you to open your mouth. इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ अपने मुंह को खोले। This is visible for every one of you. ये स्क्रीन सबको दिखाई देता है। Will you please open your mouth and answer? So we are going to sing this chorus. In the name, the precious name of Him who died for me. Everyone. Through grace I win the promised ground. Whatever my cross may be. In the name, The precious name of Him who died for me. Through grace I win the promised crown. Whatever cross may be. നല്ല പൊരുതു ഞാൻ നാമത്തിൽ കിരീടം നിത്യരാജ്യത്തിൽ എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാ ചേർന്നൻ തൻ സൈന്യത്തിൽ തന്റെ വ്യവിളി കേട്ടു ഞാൻ ദൈവാത്മാ ശക്തിയായ നല്ല പൊരുതു ഞാൻ എൻ ക്രിസ്തനാമത്തിൽ വാടാ കിരീടം നിത്യ രാജ്യത്തിൽ. என்ன பண்டில் நீ கொடுத்துருக்க? Praise God. நேற்று கொடுத்த காப்பி எங்க? நேற்று கொடுத்த காப்பி எங்க?
ये कौन सी ब्रदर आपने कॉपी लेकर आया? What is the copy yesterday I gave you? ஆனோர் சிலுவை வீரனா கிறிஸ்துவின் சீஷனா அம்மாமம் கூற கூச்சமா அணிய கச்சமா வீரமாய் போராடுவே இயேசுவின் பலத்தில் வாடா கிரீடம் பெறுவே நான் நித்திய ராஜ்யத்தில் வீரமாய் போராடுவே இயேசுவின் பலத்தில் வாடா கிரீடம் பெறுவே நான் நித்திய ராஜ்யத்தில். In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I win the promised ground. Water my cross may be. In the name, The precious name of Him who died for me. Through grace I win the promised ground. Water my cross may be. as you stand, जब हम खड़े हैं, open your Bibles आपके बाइबलों को खोले of Ephesians इफिसियों की पत्री and the 6th chapter उसका 6वां अध्याय from 10 to 17. All of us will read as loud as possible. 10 से 17 वचन तक जितना जोर से पढ़ सकते उतना जोर से पढ़े. Open your mind. Don't read through your mind. Don't read through your mind, but आपके read मन में ना through your पढ़े mouth. लेकिन मुंह से पढ़े. 10 to 17. और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, के अंधकार की हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है. परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, तुम बुरे दिन के सामना कर सको, हम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और बामिता की जलम पहनकर और में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब से विश्वास की डाल स्थिर हो, जिससे तुम परमेश्वर का वचन है. It's a very old song. ये बहुत ही पुराना एक गीत है. In my childhood, I have that fellow is standing back. In my childhood, I have sung it very often. मेरे बचपन में ये गीत मैंने बहुत बार गाया है. During the past many years, I have forgotten that. लेकिन पिछले कई सालों से मैं इस गाना को भूल गया था. The present situation necessitates that we sing this song once again in our life. अभी की वर्तमान स्थिति मुझे और भी प्रभाव डालता है कि मैं गीत को गाऊं. We will sing this. We will learn this. हम इस गीत को गाएंगे, इस गीत को सीखेंगे. This is about the spiritual warfare. ये आत्मिक युद्ध के बारे में एक गाना है. The 10th verse says, 10वां वचन में लिखा है, finally, be strong in the Lord and in His mighty power.
इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। In what we should be strong? कौन से विषय में हमें मजबूत होना पड़ेगा? In what we should be strong? कौन सा विषय में बलवंत होना पड़ेगा? In the Lord. प्रभु में। In the Lord we must be strong. हम प्रभु में बलवंत होना चाहिए। In the Lord we must be strong. प्रभु में हम बलवंत बनना है। ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి You say in Telugu. I don't ask you to read it. I want you to say in Telugu. Be strong in the Lord. ఆయన యందు బలవంతులయ్యుండుడి. I said Lord. ప్రభువునందు బలవంతులయ్యుండు. Be strong in the Lord. കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടുവിൻ. கர்த்தரில் பலப்படுங்கள். 2. दूसरा, Be strong in His mighty power. उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ఆయన శక్తిని బట్టి బలవంతులై കർത്താവിന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവിൻ. கர்த்தரின் சத்துவத்தின் வல்லமையில் பலப்படுங்கள். It is not my word. ये वचन मेरे वचन नहीं है, This is not my teaching. ये मेरा उपदेश भी नहीं है। This is what Holy Spirit wants to speak to you. यही विषय पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए चाहता है। May I say this is not a suggestion. मैं आपको बोलता हूं, ये कोई सुझाव नहीं है। This is not a suggestion from God. परमेश्वर की ओर से मिलने वाला कोई सुझाव नहीं है। God commands. परमेश्वर आज्ञा देता है And that has to be implicitly obeyed. और वो आज्ञा पूरी तरह से मानना हमारे लिए जरूरी है। If you are weak in your body, यदि आप शरीर में कमजोर है तो take soup, सूप लीजिए, eat good food, अच्छा भोजन खाइए, you will become very strong. आप बहुत ही तंदुरुस्त हो जाओगे। If you want to intellectually be strong, यदि आप बुद्धि के प्रमाण में बढ़ना चाहते हो तो read good literature अच्छे अच्छे पत्रिकाओं पढ़ो and work hard at that. और बहुत ही कठिन मेहनत करो Intellectually, you will become strong. और बुद्धि के रूप में आप बढ़ते जाएंगे। This is neither for your body, not for your mind. ये आपका शरीर का विषय भी नहीं है, आपका मन का विषय नहीं। This is concerning your spiritual life. ये आपके आत्मिक जीवन के विषय में है। This is of utmost importance to you and me these days. इन दिनों में आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही जरूरी है ये। Whom we are to be strong. हम किस में बलवंत होना है? These fellows have no mouth. Strong in the Lord. प्रभु में बलवंत होना है। And what else you have to be strong? और कौन से विषय में बलवंत होना है? In God's mighty power. प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। Samuel, look here. In God's mighty power. प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। Will you obey God? क्या परमेश्वर की बातों को मानोगे? Will you be enticed anymore by the world? क्या आप दुनिया के फंदों में कभी फंसते जाओगे? Will you be deceived by the power of the devil and demonic powers? वो शैतान की सामर्थ्यों के फंदों में फंसते जाओगे? Then you will have to bear the consequences. फिर ऐसा होगा तो आपको सारे परिणाम भोगना पड़ेगा। Sit down. बैठिए। Once again we are going to sing that song. एक और बार हम बैठकर उस गीत को गाएंगे। That is in Telugu. वो तेलुगु में है, हिंदी में भी है, All the languages of India. सभी भाषा, भारत के सभी भाषा में वो है। We are going to sing in English now, right now. अब इस समय हम अंग्रेजी में गाएंगे। Am I a soldier of the cross? Everyone. Of the and shall adhere to own his cause, are blessed to speak his name. In the name, the precious name of him who died for me. Through grace I'll win the promised crown.
on flowery beds of peace, while others want to win the prize and sail through bloody seas. In the name, the precious name of Him who died for me, through grace I'll win the promised crown, whatever my cross may be. Are there no foes for me to face? Must I not stem the flood? Is this wide world a friend to grace, to help me on to God? In the name, the precious name of Him who died for me, through grace I'll win the promised ground, whatever my cross may be. Since I must fight if I would reign, increase my courage, Lord. I'll bear the toil and the pain, supported by whatever my cross may be. Jude, third verse. यहूदा का तीसरा वचन निकाल कर पढ़ेंगे. By heart you can say by now. मुंह पाठ बोल सकते हैं आप लोग. Once again. पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया है. పరిశుద్ధుల ఒకసారి Now this is written for those who are saved. ये वचन उन लोगों लिए लिखा गया जिन्होंने उद्धार पाया है, Those who have appropriated salvation. जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया उनके लिए लिखा गया है. To them this word is written there. उनके लिए ये वचन लिखा गया है. To speak about salvation for those people who are saved, it is not necessary. जिन लोग ने उद्धार पाया है उनको उद्धार के बारे में बोलना कोई फायदा नहीं है. वो दोनों को दो साइड में बिठा दो. Praise God. The mother should know how to behave with the children, how to keep the children, so that it will be profitable. For those who are already saved, जो पहले से उद्धार पा चुके हैं, what is the use of telling them about you should be saved and you should be saved? तुम उद्धार पाना है, तुम उद्धार पाना है, उनको बोलने से क्या फायदा है? The Holy Spirit wants you to go forward in your life. पवित्र आत्मा चाहता है कि आपका जीवन में और भी आगे बढ़ते जाए. The Holy Spirit wants you to grow gradually to the stature of Christ Jesus. और पवित्र आत्मा चाहता है कि अब धीरे धीरे बढ़कर मसीह यीशु का उस कद तक पहुंच जाए. So, the Holy Spirit says to Jude, यहूदा को पवित्र आत्मा बोलता है, no need of writing anymore about the salvation. अब से लेके उद्धार के बारे में लिखने का जरूरत नहीं है, Because the first century church is already saved. क्योंकि पहली सदी की कलीसिया पहले से उद्धार पा लिया है. Only saved people are called Christians. केवल उद्धार पाए हुए लोगों को मसीही करके बोलते हैं. There is no fun in speaking about salvation again to them. फिर से उनको उद्धार के बारे में समझाना या को लिखना नहीं जरूरत नहीं है. Teach them to grow gradually in the grace of God. उनको सिखाओ कि परमेश्वर के अनुग्रह में धीरे धीरे बढ़ते जाए. To the full stature of Christ Jesus. मसीह यीशु के उस अवस्था तक पहुंचना है. What is our standard? हमारा दर्जा क्या है? Not any human being.
कोई भी मनुष्य नहीं है, No human being is allowed to be our example in this world. इस दुनिया में कोई मनुष्य भी हमारा दृष्टांत नहीं बनना चाहिए। Probably God knew the infirmities or the weaknesses of the human beings. परमेश्वर मनुष्य का सारी कमजोरी को जानता है, इसलिए That's why in many places we find. इसलिए हम कई जगहों में देखते हैं, Keep your mind on Christ Jesus. आपका मन यीशु मसीह पे लगा कर रखिए, Looking unto Christ Jesus. यीशु मसीह की ओर देखते रहे। Is it in your Bible? लिखा है आपके बाइबल में? In which Bible book it is written there? कौन से पुस्तक में लिखा है? Looking unto Jesus. यीशु मसीह की ओर देखना, Looking unto Jesus. यीशु की ओर देखना है। The author and finisher of your faith. विश्वास का कर्ता और पूर्ति करने वाला। I want to request you, विनती करता हूँ, don't look at any saint. कोई भी पवित्र लोगों के ऊपर नहीं देखे, Don't look at any great man who is called God. और कोई भी बड़ा देवता की और जो महान कहलाते हैं Every उसकी ओर नहीं देखे। person is infirm, weak. हर एक व्यक्ति कमजोर है, दीन है। If you try to imitate them, यदि आप उसको सीखने के लिए कोशिश करोगे तो your life will be utterly a failure. आपका जीवन बिल्कुल हरावट होगा, It will be a complete failure. पूरी तरह से हारा हुआ जीवन होगा। So God knew the infirmities of human beings. परमेश्वर मनुष्य का सारे कमजोरी को जानने के कारण He set Jesus as our example. उसने यीशु को हमारे लिए एक उदाहरण नहीं तो नमूना के रूप में रखा है। Anywhere you find, जहां पर भी आप देखो, God has not asked you to follow Abraham. और ये परमेश्वर ने आपको इब्राहिम का पीछा करने के लिए नहीं बोला God है। has not asked you to follow Noah. परमेश्वर ने आपको नूह का पीछा करने के लिए नहीं बोला है, God has not asked you to follow Joseph. और यूसुफ का पीछा करने के लिए नहीं बोला है। If you have to follow, यदि आपको पीछा करना है तो follow Jesus alone. यीशु का पीछे पीछे चलना There are है। so many good things in every individual's life. और हर एक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। You may try to follow, you may try to imitate them in your life. आप उसकी नकल करने के लिए कोशिश करेंगे, आप उसके पीछे चलने के लिए कोशिश करेंगे, But you and I have only one perfect example, पर मेरे लिए और आपके लिए एक सिद्ध उदाहरण एक ही है, that man Jesus. और उस मनुष्य यीशु। That man Jesus. उस मनुष्य यीशु। You may be surprised why I'm using that word. आप बहुत ही चकित हो जाएंगे कि That मैं man Jesus. उस मनुष्य यीशु, He had almost all the things that we have in our life. हमारे जीवन में जो कुछ है सब उसके पास उपलब्ध था। He had every type of temptation that we are facing in our life. आज हमारे जीवन में जो परीक्षा होता है उस प्रकार की सारी परीक्षा उसके जीवन में हुआ था। This is in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ I'm है, telling you from the Bible only. बाइबल में से ही बोल रहा हूँ। But one thing, लेकिन एक बात, he committed no sin. उसने पाप नहीं He किया, committed no sin. उसने किसी प्रकार के पाप नहीं किया, He had no deceit in his mouth. और कोई छल की बात उसके मुंह में नहीं थी। This is what God wants you and me to follow that. और परमेश्वर मुझे और आपसे ये चाहता है कि हम यही बात को पीछे And we करें। won't follow him. हम उसका पीछा नहीं करते, We will follow the silly fellows who are called great in this world. और हम उस मूर्ख लोगों के पीछे जाते हैं जो इस दुनिया में महान कहलाते हैं। Every human being you take, हर एक मनुष्य को आप पकड़िए, you will find lot of defects in his life. और आप उनके जीवन में बहुत सारे खामी और गटियों को देखेंगे। But take the life of Jesus. लेकिन यीशु का जीवन को देखिए, You will have nothing to speak against him. आपको यीशु के बारे में बोलने के लिए एक दोष की बात नहीं He होगा, was the perfect moral perfection और नैतिक विषय में बहुत ही वो सिद्ध व्यक्ति था। in money matters, और पैसे के विषयों में in moral matters, और नैतिक विषयों में he is the only perfect being. और वही एकमात्र सिद्ध व्यक्ति है। He had hunger. उसको भूख लगा, Is it in your Bible? He had thirst. उसको प्यास भी हुआ, He was tired. वो थका भी, He was drinking water. वो पानी पीता था, He was eating. वो खाना खाता था। Is it right? Is it right? He wanted to sleep. उसको सोना वो चाहता And था, we find in the Bible he slept there. और बाइबल में हम देखते हैं कि उसने सोया। Is it right? You also have hunger. आपको भी भूख लगता है, I have hunger. मुझे भूख लगता है, I thirst. मुझे प्यास लगता है, You also thirst. आपको भी प्यास लगता And है। my Jesus also thirsts. मेरे यीशु को भी प्यास लगा, He was grieved. वो बहुत ही दुखित हुआ। You grieve. आप भी दुखित होते I हो, also grieve. मैं भी दुखित होता हूँ। Did Jesus cry?
क्या यीशु रोया? He didn't cry, but he wept, the word of God says. परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसने आंसू बहाया। Jesus wept, the word of God says. बाइबल में लिखा कि उसने आंसू बहाया। So, like you and me, he was tried in every aspect. आपके और मेरे समान हर एक विषय में उसकी परीक्षा हुई The थी। word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा he है overcame. उसने उसका पर जय पाया। Dear friends of, dear children of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चे, we must have been facing so many failures in your life. हमारे जीवन में कई हरावट का हम सामना करते होंगे। Now God has brought you to such a situation परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में अभी लेकर आए हैं। that the defeat should be your past. वो हरावट आपका पिछला जीवन होने The पाए। defeat should be your past. वो हरावट आपका पिछला जीवन होने The पाए। failure should be your past. वो हार की विषय आपका पुरानी बात होने पाए। As Jesus spoke in the Yes, book of Revelation. जैसे यीशु ने प्रकाशित वाक्य में बोला, He who, will you not open your mouth? He who overcomes. जो जय पाता है, He who overcomes. जो जय पाएगा। Probably the Lord is speaking to me. प्रभु शायद मुझसे बातें कर रहा है And equally the Lord is speaking to you. और उसी प्रकार आपसे भी बातें कर रहा है। Failure, defeat should be your past. हार का जो विषय वो आपकी पुराना बात हो जाना चाहिए And yet to forward, और फिर आगे बढ़ना है। victory, जय overcoming life, और जयवंत जीवन winning life और जय का जीवन shall be the standard of this church. इस कलीसिया का स्टैंडर्ड यही बात होना चाहिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So Paul says through Ephesians, पौलुस एफेसियों के द्वारा बोलता है। what does he say? क्या बोलता है? What does he say? क्या बोल रहा है? What does he say? क्या बोल रहा है? Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो। उसको तुम कुछ पंचिंग करने की जरूरत नहीं, मैं पंचिंग करूंगा, तुम तेरा मैं काम देखो. Take your hands away from him. Praise God. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो। Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो। Will you open your mouth and say that? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in His mighty power. In His mighty power. What is that power? वो कौन सी सामर्थ That है? power is always indicating the Holy Spirit. वो शक्ति हमेशा पवित्र आत्मा को दिखाता है। My master himself said, मेरे स्वामी ने अपने आप कहा, He shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे। Say the following verse. He shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे। The following verse he say, और उसके बाद के वचन में क्या लिखा है? when the Holy Spirit comes upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा नहीं दो। I asked the Sunday school superintendent to conduct a Holy Spirit. Who is the man? He has gone away home. And I was just observing at the back. मैं पीछे बैठकर देख रहा था जब मैंने संडे स्कूल के हेडमास्टर को बोला कि पवित्र आत्मा के बारे में प्रार्थना I करें। was surprised मैं बहुत ही चकित हो गया। how powerfully he was leading the people for Holy Spirit baptism. और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए कितना सामर्थी रूप से वो चला रहे थे। I will come in between मैं बीच में आकर and I will see that you conduct the Holy Spirit waiting meeting. और मैं ये Through देखूंगा you कि only I will see that. और आपके द्वारा मैं देखूंगा कि किस प्रकार पवित्र मीटिंग आप चलाते Therefore, हो। get ready for that. और उसके लिए तैयार हो जाइए। Prepare for that. उसके लिए तैयार हो जाइए। Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो। Number 2, दूसरा, be strong in His mighty power. उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। The Holy Spirit power is the greatest power in the whole universe. और दुनिया में सबसे बड़ी सामर्थ वो पवित्र आत्मा का सामर्थ है। लंगड़े चलते लंगड़े चलते लंगड़े चलते लंगड़े चलते यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते आत्मा मंडलाता
पवित्रात्मा मंडलाता पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंतेकोस्त के दिन समान singing. आत्मा मंडलाता पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता कुर्सी पर बैठने वाले गाओ, कुर्सी पर बैठने वाले ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता 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 पेंतेकोस्त के दिन समान आंख बंद करो, मुंह खोलो। आंख बंद करो, मुंह खोलो। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता 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 पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा God is full of power. परमेश्वर शक्ति से भरा हुआ है, The Son is full of power. पुत्र भी पूरा शक्ति से भरा हुआ है, And the Holy Spirit is the source of power. और पवित्र आत्मा शक्ति का स्रोत है। You can't deceive yourself. आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। If God's word says it is true, यदि परमेश्वर का वचन ने बोला है तो वो सच है। don't leave Jerusalem. Don't leave Jerusalem. यरूशलेम को मत छोड़ो, Wait for the promise of my Father. मेरे पिता के वायदा के लिए बाट जो, You will receive power. तुम सामर्थ पाओगे। In your language you say this. You will receive power. In your language you say that. तुम सामर्थ पाओगे, You will receive power. तुम सामर्थ पाओगे। In your language you say this word. आपकी भाषा में बोलिए। We want power. We want power. हमको सामर्थ चाहिए, Not the physical power, ये शारीरिक सामर्थ नहीं, but not the political power. राजनीतिक सामर्थ नहीं, This is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। The person who created the whole universe. जिस व्यक्ति ने सारे सृष्टि का सृष्टि किया, Sometime take time कभी समय लेकर to visualize this power of God.
ये परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए समय थोड़ा निकालिए। The power of God is visible, परमेश्वर का सामर्थ दिखाई देता है and most of His power is invisible. और उसके अधिक तक सामर्थ दिखाई भी नहीं देता है। You are educated people. आप पढ़े लिखे लोग हो, I thank God for the good education the Lord is giving you. परमेश्वर ने अच्छा शिक्षा जो आपको दिया उसके लिए मैं परमेश्वर को You are धन्यवाद not देता हूँ। fools. आप मूर्ख नहीं है, You cannot be fools. आप मूर्ख नहीं हो सकते हैं। Those who cannot read and write, please come to the church. We जो are jobless. We will teach you your language. जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है चर्च में आइए, हमारे पास काम नहीं, हम आपको सिखाएंगे। We are so many people very lazy in the church building. और हमारे चर्च के अंदर बहुत लोग आलसी होकर बैठे We हैं, have got a lot of time. उनके पास बहुत समय We है, can teach you वो आपको सिखाएंगे, to read and write. आपको पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सिखाएंगे। What to read and write? क्या लिखना क्या पढ़ना है, To read and write the word of God. परमेश्वर का वचन को लिखना और पढ़ना आपको You will सिखाएंगे। get enlightenment. आप प्रकाशमान हो जाओगे। By cricket playing, you can't get any wisdom. क्रिकेट खेलने से कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं But मिलेगा, football, you can't get any wisdom. और फुटबॉल, My childhood. लेकिन मेरे बचपन से मैंने काम किया है। Maybe from the 8th or 9th verse, I have worked very hard. 8वें नहीं तो 9वें उम्र से मैंने कठोर परिश्रम किया From है। morning 6 till evening 8, I have worked. सुबह को 6 बजे से शाम को 8 बजे तक मैंने काम किया In the hot sun, I have worked. और बहुत ही कड़ी धूप में मैंने परिश्रम किया है। I have walked and walked and walked. मैं चला हूँ, बहुत चला हूँ। And here there is a great man. यहाँ पर एक महान व्यक्ति बैठे हैं, He came to church after 1 hour late. 1 घंटा लेट चर्च में आए। Only 3 kilometers is distance. केवल 3 किलोमीटर की दूरी में He has रहता है, got good leg. अच्छे पैरों भी है। And he says, I couldn't walk. I was waiting for वो vehicles. बोलता है मैं गाड़ी के लिए इंतजार कर रहा था, I मैं चल नहीं suggest सकता हूँ। every father and mother सभी माता और पिता से बोलता to हूँ, provide a cycle for your children. आपके बच्चों को एक साइकिल दे दीजिए They may come to church by cycle. कि वो साइकिल में चर्च में आ जाए, They may go to school by cycle. स्कूल में भी साइकिल से जाए And they may go to tuition by cycle. और ट्यूशन पढ़ने के लिए भी साइकिल से जाए। This fellow has started riding cycle at the age of 8. ये लड़का 8वीं उम्र से साइकिल में आना जाने लगा है। Am I right? 8 from the age of 8 he started cycling, you know. So and he is getting strong and strong and strong by cycling. जैसे जैसे वो साइकिल चलाता है उतना ही वो मजबूत होते जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord। Every girl हर एक लड़की should learn cycling. साइकिलिंग सीखना जरूरी है How आपको। many ladies know cycling? Please raise your hand. Yesterday I was firing some woman. कितने स्त्रियों साइकिल चलाने के लिए जानते अपने हाथों को Raise your बढ़ाएं। hand above the head. How many? Above your hand, I said. आपके सिर के ऊपर हाथ आना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord। And every girl should learn. लड़की साइकिल चलाना सीखना And चाहिए they should come to church by cycle. और चर्च में साइकिल में ही आना है। We will expand the cycle stand. साइकिल स्टैंड को हम बढ़ा देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। I told you in the morning probably. सुबह को मैंने शायद बोला था, In England and New Zealand, इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में they have a separate lane for cycling. उनको साइकिल चलाने के अलग एक मार्ग है। Big people they cycle. बड़े बड़े लोग साइकिल में आते हैं, Rich people cycle there. धनी लोग साइकिल में आते हैं। And now the cost of this products of petroleum prices going high. अभी पेट्रोल का दाम बढ़ते जाता है So let your children learn to live in this world. और आपके बच्चे इस दुनिया में जीने के लिए सीखना चाहिए। Then they will not borrow money for petrol and diesel. तब वो पेट्रोल और डीजल के लिए किसी से उधार नहीं Otherwise लेंगे, they have to go and beg 5 rupees give me. नहीं तो 5 रुपया 10 रुपया जाके लेना पड़े किसी से। 5 rupees के लिए पेट्रोल मिलता है? No, now 50 rupees. 5 rupees. Uncle, give me 5 rupees for putting petrol in. अंकल मुझे 5 विषयों को Is it in your Bible? Is it in your Bible? Not go after marrying, go to the father for support. और शादी करने के बाद पिता के पास जाकर सहायता लेना नहीं है। Shameless young fellows और ऐसे शर्म नौजवान having a long mustache. लंबी मूछ है Praise God, and keeping long beards. और बड़ी दाढ़ी भी है।
They are depending on the father and mother for support. और सहायता के लिए माँ बाप पर वो निर्भर है। I started earning before I was 18. जब 18 उम्र से पहले मैंने कमाना शुरू किया। I am very happy to say that. मैं बहुत इस बात में बोलने खुश है मुझे। By 17 and a half almost, और 17.5 साल की उम्र में I started earning money for myself and to support my parents. मैं मेरे लिए और मेरे माता पिता को सहायता करने के लिए मैंने कमाने लगा। Praise the Lord. Praise the Lord। I am qualified to say this. ये बात बोलने के लिए योग्यता मुझ में है। After 17, I have never enjoyed any hospitality from my mother, father. 17 साल के बाद मेरी मम्मी और पापा से कोई प्रकार की सहायता मैंने नहीं ली। I am happy that the Lord is supporting my life. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर मुझे सहायता करता है। ये लोग समझते हैं ब्रदर, ये मुझ पर आया वो लोग समझते हैं। पापा सपोर्ट करना एजुकेशन। By the age of 16, 16 साल की उम्र में all the educational support for me was over. मेरे लिए पढ़ाई की सारी सहायता माँ बाप की ओर से बंद हो गया। After 18, 18 साल के बाद, and now 82, अभी 82 उम्र है। the Lord is providing my needs. परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को पूरा करता I है। was never a कामचोर. कभी भी मेरे जीवन में मैं कामचोर नहीं था। Praise God. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says, यीशु बोलता है, he that doesn't want to work, जो काम करने के लिए नहीं चाहता है, he that doesn't want to work जो काम करने के लिए नहीं चाहता, shall not eat. वो खाना ना खाए, Shall not eat. वो खाना भी ना खाए। Still I am finding some fellows' heads are going like this. Their heads can never stay. Praise God. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Finally, brethren. इसलिए Finally, brethren. मैं भाइयों, What should be your strength? आपका सामर्थ किस में होना चाहिए? Who should be your strength? हमारा शक्ति किस में होना चाहिए? Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो। Number 2, और दूसरा, strong in His mighty power. उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। How you are obtaining that power? उस शक्ति को कैसे प्राप्त करोगे? By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। I am telling Mr. C.D. Thomas, मैं ब्रदर सीडी थॉमस से बोलता हूँ, thank you for the great responsibility you are shouldering. और जो बड़ी जिम्मेदारी आप उठाते हो उसके लिए धन्यवाद। Make sure और इस बात को every सुनिश्चित कर लो, student coming to the Sunday school should be filled with the Holy Spirit. संडे स्कूल में आने वाले हर एक बच्चा पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। Even if they don't study anything else, और कुछ पढ़ाई न करे तो भी ensure the students are filled with the Holy Spirit. ये आप निश्चय कर लो कि सभी बच्चे पवित्र आत्मा पाए। And make all your co-teachers to kneel down here और आपके सभी साथ जो अध्यापकों को यहाँ पर घुटने टेकवा कर and pray that the students may be filled with the Holy Spirit. और प्रार्थना करें कि सभी बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाए। Now, what is this that you are going to do there? और अभी आपको क्या करना चाहिए? 11th verse. 11वां वचन, Put on the full armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। Somebody told me किसी ने मुझसे कहा, there is protection for every member of the body, हमारे शरीर के सारे अंगों के लिए सुरक्षा है, but God has not given any protection for the backside. लेकिन परमेश्वर ने हमारे पीछे भाग के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं दिया There है। is protection for every member of your body, हमारे शरीर के हर एक अंगों के लिए सुरक्षा है, but for the backside God has not given any लेकिन protection. पिछले भाग के लिए परमेश्वर ने कोई ऐसा सुरक्षा नहीं दिया है। Somebody explained this in this way: किसी ने इस प्रकार समझाया, for backsliders, जो लोग पीछे हट गए हैं, for backsliders, जो पीछे हट गए, there is no protection for them. उनके लिए कोई भी प्रकार की संरक्षण या सुरक्षा नहीं है। The arrow should pierce their back उनका पीठ में से जो तीर लगेगा and they will die there और वहां मर जाएंगे and they will perish over there. और वहां पर नाश हो जाएंगे। They will die over there वो वहां पर ही मर जाएंगे, and they will perish over there. वहां पर सत्यानाश हो जाएंगे। Now keep on reading that. अभी हम पढ़ते जाएंगे। Full armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। See that word full? देखिए, Is it in your Bible? आपके बाइबल में फुल लिखा होगा। What does it say in your language? దేవుడిచ్చి సర్వాంగ కవచమును सर्व अंग दहनम. तुमको समझ में नहीं आएगा, जैसे तुम पढ़ता है तुमको समझ में नहीं आएगा. सर्वांग, व्हाट इज सर्वांग? इधर व्हाट ऐसे ही लिखा है बंडल. इधर देख, सर्व
Anga. You got the point now? Sarvanga. What is a sarvanga? Sarvanga. What is a sarvanga? Sarva anga. Sarva anga. Praise the Lord. ಸರ್ವ ಆಯುಧ ವರ್ಗಂ. Sarva. ಆಯುಧ ವರ್ಗ. Ayuda. Sarva. ஆயுத வர்க்கம். तेरे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, धोखा देती है. சர்வாயுத வர்க்கம். Praise the Lord. Hallelujah. What is that? सारे हथियार बांध लो. Sare hatyar. That means, in order to protect you while you are existing in this world, God has given you every armor needed. परमेश्वर ने सारे हथियार आपको इस दुनिया में दिया है जब यहाँ पर पृथ्वी पर अब जीवित है, To protect your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन को संभालने के लिए. Don't say, I have no armor. आप ऐसा ना बोले कि मेरे पास कोई हथियार नहीं. God has provided. परमेश्वर ने हथियार दिया है It is your business to take upon and wear it. और आपका काम यह है कि वो हथियार को धारण करना नहीं तो पहनना है. You have to take upon आप उसको उठाकर and you wear it. आप उसको पहन लीजिए. Don't forget, कभी भूलना we नहीं, have a struggle. हमारे लिए एक संघर्ष है, We have got a battle. हमारे लिए एक युद्ध है, We have got a great warfare. हमारे लिए एक बड़ी युद्ध है. With whom? किससे? With your neighbor? क्या आपके पड़ोसी से With है? your neighbor? आपके पड़ोसी से है? With your superior? क्या आपके ऊपर के लोगों With से है? your subordinates? आपके नीचे काम करने वाले लोगों With से? your co-worker? आपके साथ काम करने वाले लोगों No, से? forget it. उसको भूल जाइए. The devil is making you to fight each other. और शैतान हमेशा एक दूसरे को लड़वाता है. It is a deceit of the devil. ये शैतान का धोखा है, This is a trick of the devil. ये शैतान की चतुराई This है, is a scheme of the devil. ये शैतान की युक्ति है. You don't understand it so far. अभी तक आप उसको समझ नहीं पाए हो. No human being can ever be your enemy. कोई मनुष्य कभी भी आपका दुश्मन नहीं हो सकता The है. devil will induce them to become your enemy. और शैतान हमेशा ऐसा चाहेगा कि वो आपका दुश्मन बन जाए, Because that fellow is invisible. क्योंकि वो व्यक्ति अदृश्य है. You are fight with your own people. आप आपके खुद के लोगों से And you destroy yourself. और अपने आप को नाश कर देते You हैं. fight with your own people. आप खुद के लोग से लड़ते हो, And you are destroying yourself. आप अपने आप को नाश कर रहे हो, And you become a source of great punishment from God. और परमेश्वर से हमेशा के लिए दंड के योग्य हो जाते हो. From God. परमेश्वर की ओर से, From God. परमेश्वर की ओर से. If you fight against each other, यदि आप आपस में लड़ोगे my तो God will severely punish you. मेरा परमेश्वर आपको भारी दंड My देगा. God will severely punish you. मेरा परमेश्वर आपको भारी सजा देगा. He won't spare anyone. वो किसी को भी नहीं देगा. So what is that you can do there? आपको क्या करना चाहिए? Why you must put on the whole armor परमेश्वर के सारे हथियार क्यों धारण करना so है? that you can take your stand against the devil's schemes. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको. You can take your stand against the devil's schemes. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको. అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు ശക്തിമന്తులగునట్లు പിശാചിന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയും. അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ അവന് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க പിശാചിൻ തന്ത്രങ്ങൾ. Will you repeat by your mouth? आपके मुंह से आप बोलेंगे Devil's schemes. शैतान की युक्तियों, Devil's schemes. शैतान की सारी युक्तियों, Devil's schemes. शैतान की युक्तियों. That Hindi translation is better. Yuktiyon. Schemes. Malayalam is clear. Tantrangal. क्या बोला तेलुगु में? అపవాది తంత్రాలని తంత్రాన్ని నీకుందా? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कभी-कभी मैं हिट करता हूँ. Praise the Lord. तंत्रंगल. Praise the Lord. तमिल में तंत्रम नहीं होता है. തന്ത്രങ്ങൾ എപ്പോ ഇതെല്ലാം വിടപ്പോറെ എപ്പന്തൊക്കെസുകാരങ്ങൾ അതെല്ലാം വിടുന്നതാ തന്ത്രങ്ങൾ. Schemes, devil schemes. शैतान की युक्तियों. You have stand against the devil schemes. शैतान की युक्तियों का सामना खड़ा रह सको. Why? क्यों?
Our struggle is not against flesh and blood. हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। How many boys fight against their mothers? कितने लड़कों अपने मम्मी से लड़ते हैं? हाँ? मम्मी से लड़ते हैं। हाँ, तो ठीक है, आप लड़ते हैं बोला तो बहुत अच्छा, क्लियर नहीं है। फाइटिंग अगेंस्ट माय वाइफ, आई थिंक no fellow here sitting is never ever fighting against his wife. कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी से झगड़ा नहीं करते। इधर बैठने वाले लोगों को खड़ा कर दो, शादी किए हुए लोगों को। From first lane onwards, I never fight with my wife. मैं मेरे पत्नी के साथ कभी नहीं लड़ता हूँ। I never fight with my wife. मेरे पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं करता हूँ। I never fight with my husband. मेरे पति के साथ कभी झगड़ा नहीं करती हूँ। Where is Rita? I never fight with my wife. पत्नी के साथ कभी नहीं झगड़ता हूँ। We never fight with each other, brothers. हम आपस में भाइयों कभी नहीं झगड़ते हैं। We have a great man here, हमारे लिए एक महान व्यक्ति बैठे a हैं, chartered accountant, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, and his brother is also studying for some other accountancy. और उसका भाई भी कोई अन्य अकाउंटेंसी के लिए पढ़ रहा है। We don't fight each other. हम आपस में नहीं झगड़ते हैं। We don't fight each other. हम आपस में झगड़ा नहीं करते There हैं। are some girls, two girls together. यहाँ पर दो कुछ लड़कियां भी है। We don't fight each other. हम आपस में झगड़ते नहीं हैं। We don't fight each other. हम आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। Can you stand and give testimony? We don't fight each other. We don't fight at home. We don't fight at हम home. घर पे झगड़ा नहीं करते हैं। We don't fight in the school also. भी हम झगड़ा नहीं करते हैं। We don't fight in the school. स्कूल में भी हम झगड़ा नहीं करते। 11 years I studied. 11 साल मैंने पढ़ाई किया I think 11 years I have not fought with anybody. और 11 साल मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। 16 years I worked in my offices. 16 साल मैंने ऑफिस में काम किया। I never fought against anybody. किसी से मैं नहीं लड़ा, Never fighting. कभी कोई फाइट नहीं किया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Fight. लड़ा, Fight. लड़ना, Fight. कोई लड़ाई। But we have a fight. लेकिन हमारी एक लड़ाई है। With whom? किसके विरुद्ध में है? With whom? किससे है? With whom? किसके सामने है? Can Philip say, I never fought in the school? Philip. Philip. Can you say, I have never fought in the school? And this fellow can say, I never had any fight with anybody in the school. But we have a fight. हमारी एक लड़ाई है। We have a fight. एक लड़ाई हमारे लिए है, Not against the blood and flesh. मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं। Against whom? किसके विरुद्ध में है? Against the rulers. अधिकारी के विरुद्ध में है। Not against the governor. गवर्नर के विरुद्ध में नहीं, Not against the collector. कलेक्टर के विरुद्ध में नहीं, Not against the mamladar. मामलतदार के विरुद्ध में नहीं। There are ruling forces in the world. ये दुनिया में राज करने वाले लोग हैं। The head is the Lucifer. उनका जो मुख्य है वो लूसीफर है। About Lucifer, where you are reading? लूसीफर के बारे में आप कहाँ पर पढ़ते हो? Isaiah यशायाह 14 chapter. 14 अध्याय, Ezekiel एसेकिएल 20, 28. There are 3 chapters about that fellow. और उस व्यक्ति के बारे में 3 अध्याय अलग अलग पुस्तक में लिखा है। And he has got a great, powerfully systemized kingdom. और उसके लिए एक सिस्टम का एक राज्य भी उसके लिए है। As there is a systematic government in the world, जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कि सरकारों है the president is the supreme commander. और उसका सुप्रीम कमांडर भी है। And he has established governors every state. और सभी जगह में उसने राज्यपाल ने तो गवर्नर को And नियुक्त that किया है। man has established collectors in every district. और उस व्यक्ति ने सभी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को रखा है। And that collector has established every taluk, is right? Taluk mamladars. और है उस कलेक्टर ने सभी मामलेदार को भी नियुक्त किया है। So perfectly established. इतना अच्छी तरह से सब कुछ आयोजन किया है। If the president takes about or brings about a ordinance, यदि राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लेकर आता है, within 5 minutes that can be known to all over the world. और वो 5 मिनट के अंदर पूरा दुनिया में वह बात फैल जाएगा। The communication has reached such a fast
speed expression. और ये समाचार इतना जल्दी से फैल जाता है The system is attached to each other. और सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Within 5 minutes, everywhere this can be brought to. 5 मिनट के अंदर ये विषय सभी जगह में फैल सकता है। So similarly, उसी प्रकार the devil also has the same thing. शैतान को भी इसी प्रकार के सारे तंत्र हैं। He is called Satan. उसको शैतान बोलते He is हैं। called devil. उसको शैतान He बोलते is हैं। called Lucifer. उसको लूसीफर बुलाते हैं। And he is called the dragon, old dragon. उसको पुराना अजगर करके बोलते हैं। So many names he is called. बहुत सारे नाम लिखा है। He has established his government in such a way, उसने अपनी सरकार को इस तरह से बनाकर रखा है within moments it can be spread all over the world. और पूरा थोड़े क्षण में पूरा दुनिया में वो फैल सकता You है। got the point? आपको समझ में आ रहा है? They rule over his people. अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार राज्य करता है। उनके लोगों के ऊपर. उनके He लोगों- rules over his people. वो अपने लोगों के ऊपर राज्य करता है। And that's why those people are dancing in the world. इसलिए वो लोग अभी इस दुनिया में नाच रहे हैं। Murderers, हथियारे हो गए हैं, thief, theft, चोरी करते हैं deception, और धोखा देते हैं। all the fights between human beings. लोगों के बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है, That devil is creating. वो शैतान बनाता है। The fight in your family, the devil is creating. आपके परिवार में होने वाला युद्ध भी वो शैतान करवाता है। And whatever he says, और जो कुछ वो बोलता है and his people obey that. उसके लोग उसको मान लेते हैं। If so, ऐसा हो तो I must obey my master's voice. मुझे मेरा स्वामी के शब्द को सुनना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Every one of his devil, demonic powers, सारे शैतान की सामर्थ, they ought to obey him. वो सभी लोग उसकी बातों को मानना चाहिए। They ought to obey him. वो उसका बात को मानना जरूरी है। And if so, यदि ऐसा हो तो you are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं। Should you not obey God? क्या हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानना चाहिए? No answer. No answer. Praise the Lord. Praise the Lord। But many times पर कई बार we change our allegiance. हम हमारा जो दोस्ती बदल देते हैं। My Jesus says, मेरा यीशु कहता है the devil is a liar. शैतान तो झूठा है, The devil is a murderer. शैतान हत्यारा है। Is in your Bible? The devil is a liar. शैतान झूठा है, The devil is a murderer. शैतान हत्यारा है From the beginning, और शुरुआत से ही he's a liar. वो झूठा है, He's a murderer. वो हत्यारा भी है। And one thing more, और एक बात, he is the father of lies. वो झूठ का पिता है। He is the father of lies. शैतान झूठ का पिता So है। if you are speaking a lie, यदि आप झूठ बोलते हो तो temporarily you become his children. थोड़े समय के लिए आप उसके संतान हो जाते हो। So should you speak a lie? क्या हमको झूठ बोलना चाहिए? Should you speak a lie? झूठ बोलना चाहिए? Should you speak a lie? क्या झूठ बोलना चाहिए? Open your mouth, man. The company working fellows. कंपनी में काम करने वाले लोग, The company working fellows. कंपनी में नौकरी करने वाले लोग, The company working fellows. कंपनी में नौकरी करने वाले लोग, It is very difficult for you, आपको बहुत ही कठिन है बात, but it can be very easy. लेकिन बहुत ही सरल हो सकता My है। master said, मेरे मालिक ने कहा, Simon, 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 हे शिमोन, हे शिमोन, हे are शिमोन, you sleeping? क्या तुम सोते हो? Are you sleeping? क्या तुम सोते हो? Who doesn't sleep? Who कौन- doesn't sleep? कौन सोता नहीं? I sleep. मैं सोता हूँ। As my age advances, जैसे मेरा उम्र बढ़ते जाता है, the time of my sleeping also increases. मेरा सोने का जो समय वो भी बढ़ते जाता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I don't know why it is so. मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों है, It is due to the fatigue. मेरे को थकावट की वजह से होता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। No work, still I am fatigue. I face fatigue. कोई काम नहीं, फिर भी मुझे बहुत ही थकावट महसूस होता That's है। because of old age. मेरा उम्र ज्यादा इसलिए है, There is nothing to be surprised about that. उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। So Peter says, पतरस ने कहा, I am getting sleep. मुझे नींद आता है। Master says, स्वामी कहता है, awake, जाग उठो, awake. जागो Is that right? Yes. And pray. और प्रार्थना करो। Awake जागो and pray. और प्रार्थना करो। My master says, मेरे स्वामी कहता है, be awake, जागो be alert. और बहुत ही सावधान रहो। थोड़ा आप सीधा बैठे, पापा कितना सीधा बैठा है। आप भी सीधा बैठे, तुम भी सीधा बैठो, देखो पापा कैसे सीधा बैठा है। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। And he began sleeping. और वो सोने लगा। He was so tired. इतना थक गया, So इतना थका हुआ था। sleep sometimes he has spent.
कभी कभी रात को सोया नहीं था वो, He doesn't want to sleep, अभी सोना, but sleep comes. लेकिन नींद आता है। He doesn't want to sleep, सोना नहीं चाहता है, but he sleeps. लेकिन वो नींद आ जाता है। इधर देख। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। He doesn't want to sleep, सोने के लिए नहीं चाहता है, but because of the circumstances, लेकिन परिस्थितियों के कारण his mind is loaded with many problems, उसका मन कई प्रकार के समस्या से भरा हुआ है, many thoughts, कई विचारों, many burdens. कई बोझ, He keeps on sleeping. वो इसलिए सोते रहता है। Jesus woke him up, यीशु ने उसको जगाया, and one thing he said, उससे एक बात बोला that you may not fall into temptation. कि तुम परीक्षा में न फंसो, That you may not fall into temptation. इसलिए कि तुम परीक्षा में न फंसो। How many of you are having in your Bibles? आपके कितने लोग के बाइबल में लिखा है? Keep awake जाग उठो and be praying और प्रार्थना करो that you may not कि fall तुम into temptation. परीक्षा में न फंसो। Praise the Lord. Praise the Lord. There is some problem in this place, brother. There is more temperature in this area. Can you locate this problem? This area is more hot. Praise God. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So what the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? We have fight. हमें एक युद्ध है, We have got battle. हमारे लिए युद्ध है We have to struggle. और हमको संघर्ष करना Number चाहिए। one, पहला, against the rulers. और प्रधानों के विरुद्ध में, Number two, और दूसरा against the authorities. अधिकारियों से, Number three, और तीसरा powers this dark world. संसार के अंधकार के Number हाकिमों से, four, और चौथा against the spiritual forces of evil in heavenly realms. दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। Repeat these four enemies ये चार शत्रुओं के बारे में बोलिए। in your own Bible. You say, repeat these four आपके बाइबल enemies. में से निकाल कर बोलिए। Four types of demonic powers. Four types of demonic powers. चार दुष्टात्मा की सेनाओं, Four types of demonic powers. चार दुष्टात्मा की सेना। If you want to be a child of God, यदि आप परमेश्वर का संतान बनकर रहना if चाहते you हो, want to be a spiritual person, यदि आप आत्मिक व्यक्ति बनकर रहना चाहते हो, everyone, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, everyone हर एक व्यक्ति has to face these four types of demonic powers. ये चारों शैतान की सामर्थ्यों को सामना करना पड़ेगा। Nobody is above this. इससे परे या इससे ऊपर कोई नहीं है, Nobody is above this. इसके ऊपर कोई नहीं है। You are bound to fight against these things. आपको इस चार विषयों के विरुद्ध में लड़ना जरूरी If you है। want to go to heaven, यदि आपको स्वर्ग में जाना है, if you want to receive the blessings of God, प्रभु के आशीष पाने के लिए चाहते हो तो every child of God, हर एक परमेश्वर के संतान, every child of God, हर एक परमेश्वर के संतान, every born again child of God, हर एक नया जन्म पाए परमेश्वर के संतान, everyone who has to go to the heavenly places, जो स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए चाहता है, you have to fight these four types of demonic powers, ये चार शैतान की सामर्थ्यों के विरुद्ध में आपको लड़ना पड़ेगा। one above the other, एक दूसरे से बढ़कर, one above the other, एक के ऊपर दूसरा बढ़ते हुए, one above the other. एक के ऊपर बढ़कर। I try to make you understand the things. मैं आपको विषयों को समझाने के लिए कोशिश करता हूं। The president is there, राष्ट्रपति है, and below him there are governors, उसके नीचे राज्यपाल है, and under every governor there are collectors, और सारे राज्यपाल के नीचे कलेक्टर है, and under every collector there are mamladars, और हर एक कलेक्टर के नीचे मामलतदार है, and every mamladar under mamladar there is village officers. और हर एक मामलतदार के नीचे विलेज ऑफिसर They are है, under the police inspector there is sub inspector, और उसके नीचे सब इंस्पेक्टर है, and under the sub inspector there are head constables, और उसके नीचे हेड कांस्टेबल है, and under the head constable there are constables. और उसके नीचे कांस्टेबल है। Systematically they work there. एक प्रणाली के रूप में, सिस्टमेटिक रूप में The है। devil is working very, very systematically. शैतान बहुत ही पद्धति से काम करता है, And if you pass
pass over the inspector, यदि आप इंस्पेक्टर को पार करके जाते हो then तो, there'll be district superintendent. और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, If you pass over the district superintendent, और उससे पार करके जाएंगे तो, then you have to pass that IG of police. और उसके बाद आईजी पुलिस के पास जाना If है। if you want to go to hell, यदि आपको नरक में जाना है तो you need not fight against anybody there. किसी के विरुद्ध में लड़ने की कोई, Free to live anywhere in the world. आप दुनिया में किधर भी रह सकते But हो। if you want to be a child of God, यदि आप परमेश्वर का संतान if बनकर you रहना want चाहते to go to heaven, हो, यदि आपको स्वर्ग में जाना है, you have to struggle against all these things. आपको इन सारे विषयों के विरुद्ध में संघर्ष करना पड़ेगा। Rulers, प्रधानों, authorities, अधिकारियों powers of dark world, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, spiritual forces of evil in the heavenly realms. दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं जो स्वर्ग में है। Are you able to understand that? आपको समझ में आ रहा है? Are you able to understand that? इन सारे विषयों को आपको समझ में आ रहा है क्या? If you want to go to hell, there is no problem. यदि नरक में जाना है तो कोई समस्या नहीं। Don't go to church. चर्च में न जाओ, Don't go read the word of God. परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ो, There is no need of any holiness. कोई पवित्रता की जरूरत नहीं। You can lead anything, you can do anything in the world. आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, जो चाहे वो कर सकते हो। Would you like to go back? Would you like to go back? क्या आप वापस जाने के लिए चाहते हो? Very easy. बहुत ही And सरल। after death, और मरने के बाद you can directly go to the hell. आप सीधा नरक में जा सकते हो। You can go to the hell. नरक में जाकर You can be with the devil. शैतान के साथ हमेशा रह पाओगे। Not even a single moment you will have any peace. कोई एक क्षण भी आपको शांति नहीं मिलेगा। Tormentation, हमेशा पीड़ा होगा, fights, हमेशा झगड़ा, crying, रोना, weeping. आंसू बहाना। How many of you want to go there? कितने लोग वहां जाने के लिए चाहते हैं? I would suggest next Sunday onwards you don't come to this church. और मैं आपको सलाह देता हूं कि अगला रविवार से अब चर्च में भी नहीं आना। This church is meant for those who want to go to heaven. इस कलीसिया उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हैं। Is it right? If you want to go to that heaven, यदि आपको स्वर्ग में जाना है, praise the Lord, praise the Lord, you have to make this struggle. आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा। There is a man who is sitting behind एक व्यक्ति पीछे बैठा है, and he can't read and write. वो लिख पढ़ नहीं सकता है। One day I asked him, एक दिन मैंने उससे पूछा, "Why, what happened to you? Have you not gone to school?" क्या आपको क्या हुआ, आप स्कूल में गए नहीं हो? He's about 30 years old now. अभी 30 साल का उम्र है, No language he can write. कोई भाषा लिख नहीं सकता Some है, language he can speak. और कुछ भाषा केवल बोल सकता No है, language he can read. कोई भी भाषा वो पढ़ नहीं सकता। He said, "I was going to school. वो बोलता है मैं स्कूल जाता था, But as I was going to school, जब मैं स्कूल जाता था I ran away with my brother मेरे भाई के साथ दौड़कर, to feed the buffaloes." और मैं भैंसों को खाना खिलाने जाता था। You understand me? आप समझ रहे हो? No need of going to school. स्कूल जाने का जरूरत नहीं, What's the use of writing and reading and all those things? और लिखना पढ़ना उसका क्या जरूरत Go है? after the buffaloes, उस भैंस के पीछे जाओ feed them and eat, feed them and eat, feed them and eat. और भैंसों को खिलाओ और खुद खाओ, भैंसों को खिलाकर खुद खाओ। Now he is 30 years old. अभी 30 उम्र का है, He knows to speak one or two languages, एक दो भाषा बोलने के लिए जानता है, but he has nothing to live for himself. लेकिन अपने लिए जीने के लिए कोई विषय नहीं है उसके लिए। But if you go to school, यदि आप स्कूल जाओगे तो what a tremendous botheration it is. कितना बड़ी झंझट है। You can't run over here as you feel. आपको जैसा चाहता है ऐसा यहाँ वहां दौड़ नहीं सकते हो। Praise the Lord. Praise the Lord। You can't play as you like. जैसा आप खेलने के लिए चाहते हो वैसा खेल नहीं You have to पाओगे। be disciplined. बहुत ही You अनुशासन से have to रहना, study. आपको पढ़ाई करना You have to चाहिए, learn. आपको You सीखना have to है, be patient. बहुत ही धीरज You धरना have to है, pay attention. बहुत ही ध्यान से बैठना है, And then you can get pass in your examinations. तभी आपकी परीक्षा में आप पास हो पाओगे, You will get good jobs. अच्छा नौकरी मिलेगा, You can have good cars. अच्छा गाड़ी मिलेगा, And they can get good voice also. Is that right? Yes. Thank you. अच्छे पत्नियों भी मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। You can have lot of money. बहुत पैसा मिलेगा, You can become a helicopter pilot. और हेलीकॉप्टर का पायलट बन You जाओगे, can get airplane pilot. और हवाई जहाज का पायलट बन सकते For हो। that suffering is needed. उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, Struggling is needed. संघर्ष का जरूरी है, You have to be disciplined. और बहुत ही अनुशासन का जीवन। Unless you have perfect discipline,
और जब तक पूरा अनुशासन नहीं है you तो will not be able to understand that. आप इन बातों को समझ नहीं Then पाओगे। you can go to New Zealand, फिर न्यूजीलैंड you जाकर can go to Australia, ऑस्ट्रेलिया भी जा you पाओगे, can go to Kuwait, कुवैत जा पाओगे, you can enjoy your life. आपका जीवन में Similarly, उसी प्रकार Christian life is a disciplined life. मसीही जीवन एक अनुशासन से भरा हुआ You've got जीवन, lot of enemies, बहुत ही शत्रु है, lot of enemies. बहुत सारे शत्रु है। The devil won't allow you to go forward. शैतान आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ेगा, He will never allow you to go forward. कभी आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। Whatever you do, जो कुछ आप करते he हो will put hindrance. वो बीच में रुकावट He डालेगा, will put hindrance. बीच में बाधाओं को डालेगा। Ask these fellows, इन भाइयों से पूछिए, class test is there, क्लास का टेस्ट होता है monthly test is there, और महीने का टेस्ट होता है quarterly test is there. और 3 मासिक टेस्ट होता है। Praise the Lord. Praise the Lord। Above all these tests, past test is there. Past test is there, no? Past is pinching, bring your marks. Past is pushing, bring your marks. You know, there was a boy, he was formerly living here, very smart boy in studies. I don't know whether he's a mischief maker. And one day he got less marks, I think so. And from here, I think that fellow is here. And that fellow took his, oh my God, he went up to Mundra, cycling and cycling and cycling. Because at the proper time he didn't come here. So I got worried. I'm very punctual. I am very punctual. I telephoned his parents. He might have got pass mark, but he got less mark. He was scared. और ये लड़का यहाँ से मुंद्रा तक 55 किलोमीटर साइकिल चलाकर चला गया। Yeah. And the mother became mad, brother. और उसकी मम्मी पागल हो गई। So keep punctuality. इसलिए हर एक काम में समय का पालन करिए। Punctuality. हर एक विषय में बहुत ही। How many mothers are worried if your child is not reaching in time? कितने माँ चिंतित हो जाती जब उसका बच्चा घर पे समय पे नहीं आता Please है। raise your hand above. See that even that man, now that fellow is a great grandfather. Raise your hand. How many mothers are worried when the children are not in time? कितने माँ चिंतित हो जाती जब उसका बच्चा समय पर घर पे नहीं आता है। I'm not a mother, मैं माँ नहीं हूँ, but still I am worried. फिर भी मैं बहुत ही चिंता करता हूँ। Time is time. समय समय है। Now you got the point? आपको अभी समझ में आ गया? Jude says, यहूदा बोलता है, we have to contend for the faith. We have to contend for the faith. हमें विश्वास के लिए यत्न करना है, लड़ना चाहिए। We have to contend for the faith. विश्वास के लिए लड़ाई करना है। In order to contend for the faith, विश्वास के लिए लड़ने के लिए God has given you full armor. परमेश्वर ने आपको सारे हथियारों को दिया है। God has given you full armor. परमेश्वर ने सारे हथियार आपको दिया है। You ought to put on the full armor of God. वो परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर, Full armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार को बांधकर, Therefore, और इसलिए put the full armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार को बांधकर। Do you understand that? Do you understand that? आप समझ रहे हैं? Put on the full armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो So that कि तुम when the day of evil comes, बुरे दिन आने के समय, मुंह से बोलो ये शब्द, when the day of evil comes, बुरे दिन आने का समय, when the day of evil comes, जब बुरे दिन आते हैं, మీరు ఆపద్దినమందు क्या पढ़ता है तेलुगु यार? మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించుటకు तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है ब्रदर. Read it clearly, man. మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించుటకు ఆపత్ దినమందు. ఆపత్. ఆపత్. ఆపద దినమందు Praise God.
നിങ്ങളുടെ ദുർദിവസത്തിൽ துர்திவசத்தில் தீங்கு நாளிலே அவைகளை எதிர்த்து தீங்கு நாளிலே. அப்போ உனக்கும் எனக்கும் என்ன உண்டாகும்? தீங்கு நாள் வரும். சொல்லி கொடு இவங்களுக்கு எல்லாம். தீங்கு நாள் வரும்னு சொல்லு. தீங்கு நாள் வரும்னு சொல்லு. தீங்கு நாள் മലയാളത്തില് ദിവസം വരും. ദുർദിവസം വരും. നിനക്കും വരും എനിക്കും വരും. ദുർദിവസം നിനക്കും വരും എനിക്കും വരും. आपस बोलो क्या है? ఆపద దినమందు हाँ ఆపద దినమందు वो दो सेपरेट करके बोलो. ఆపద దినమందు ऐसे ఏం చేయాలి? I am not God to understand all your language as you pronounce in any way. God understands that. But I am a servant of the Lord. The thing is, everyone has to face the evil day. विषय यही है कि हर एक व्यक्ति को बुरा दिन का सामना करना पड़ेगा. Every person has an evil day. हर एक व्यक्ति के लिए एक बुरा दिन है. Maybe one evil day एक बुरा दिन or many evil days. या तो बहुत बुरे दिन आने वाले And हैं. for God's people, और परमेश्वर के लोगों के लिए these are evil days. ये दिन बुरे दिन है. And the evil situation will keep on increasing. It will not go on decreasing. और बुरे काम बुरे दिन बढ़ते जाएगा, वो कम नहीं होगा. Yesterday I told you, कल मैंने बोला था, as the waves of the sea are raging. जिस प्रकार समुद्र का लहरों मारते रहता है. How many of you have seen the seas? आपने कितने लोगों ने समुद्र को देखा है? How many of you have seas? I have seen sea. मैं समुद्र को देखा है मैंने. And how many waves are coming per hour? और एक घंटे में कितने लहर उठते हैं? How many waves are coming per hour? एक घंटा में कितना लहर समुद्र में 5. उठता है? Many means తెరవబడుటకు this fellow should be sent to primary school for studying English. You may be able to stand. നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും. ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ. സമുദ്രത്തിന്റെ നീ കന്യാകുമാരിക്കാരിയോ തിരുവനന്തപുരംകാരിയോ? കന്യാകുമാരി എത്തണോ? കെട്ടിച്ചത് കന്യാകുമാരിയിൽ, ജനിച്ചു വളർന്നത് കന്യാകുമാരി കിട്ടി. ഇവിടെ നോക്ക്, കന്യാകുമാരിയിൽ കടൽ തീരത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ? കടൽ നിന്നിട്ടുണ്ടോ? അല വരുമ്പോൾ നിന്നിട്ടുണ്ടോ? അല വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ കാലെങ്ങനെ ഇരിക്കും? സത്യമായിട്ട് പറ, നിൽക്കാൻ പറ്റി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കന്യാകുമാരി കടൽ തീരത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ? പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? കൊല്ലക്കോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. കന്യാകുമാരി പോയിട്ടുണ്ട്. After the wave comes, if you stand there, and what will happen when the wave goes back? Down from your leg, आपके पाँव के नीचे the sand would have gone, मिट्टी निकल जाता है and you have gone down. और आपका पैर नीचे उतरते जाता है. But here the word of God says, यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, you have to stand firm. आपको स्थिर खड़ा रहना है. You have to stand firm. स्थिर खड़ा रहना पड़ेगा. Temptations will come. परीक्षा आएगा, Problems will come. समस्या भी आएगा, Like wave after wave will come. लहरों के पीछे लहरों मारते रहेगा, You have to stand firm. लेकिन आपको स्थिर खड़ा रहना पड़ेगा. Hallelujah. Praise the Lord. Stand your ground. और ताकि आप स्थिर खड़ा रहो. You have done everything to stand. After you have done everything to stand. सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. You understand that? आपको समझ में आ रहा है? We are born in the world आप दुनिया में जन्म लिया, not because we wanted to come in the world. इस दुनिया में आने के लिए नहीं चाहा. Have you? You wanted to come in the world? Open your mouth, man. बोलो भैया हिंदी में. You wanted to come in the world? क्या आप इस दुनिया में आने के लिए चाहते थे? I am not. मैं नहीं चाहता था. By the plan of God परमेश्वर की योजना के अनुसार or by the desire of your parents, या तो आपकी माता पिता के इच्छा के we are अनुसार in the world. हम इस दुनिया में हैं. That was not our choice. हमारा चुनौती नहीं था, But now we are in the world. लेकिन अभी हम दुनिया में हैं. We have to stand firmly. हमको स्थिर खड़ा रहना है. Praise the Lord. Praise the Lord. For that purpose, और उसी कारण we have to stand firmly.
हमको स्थिर There is रहना। a great struggle. बड़ी एक संघर्ष है। Praise the Lord. Praise the Lord। There is a great fight. एक बड़ा युद्ध है। There is a great fight. एक बड़ा युद्ध है Nobody can avoid this fight. और उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। Nobody can have a shortcut away from this fight. कोई भी पतली गली नहीं पकड़ सकते हैं। Everybody has to fight. हर एक व्यक्ति को लड़ना जरूरी है। समझने वाले हाथ बढ़ा दो. You have a warfare. हमारे लिए युद्ध है। You have a warfare. आपके लिए एक युद्ध है You can't avoid that warfare. और उस युद्ध से बच नहीं पाओगे। And in order to face that warfare, उसको सामना करने के लिए God has given you His armor. परमेश्वर के हथियार आपको दिया है। God has given you His armor. परमेश्वर उसका एक हथियार दिया है Your duty is to take that on you. और आपका काम है उस हथियार को पहन लो। And what are that armor? और वो कौन कौन से हथियार है? What are that armor? कौन कौन से हथियार है? Stand firm. Stand firm. स्थिर खड़ा रहो। Stand firm. నిలబడుటకును Stand firm. నిలబడుటకు निलोबड़ी लिखा है. Stand firm. Stand firm स्थिर खड़े रहो with the belt of truth. और सत्य से अपनी कमर What is the opposite word for truth? सत्य का विरोधी शब्द क्या है? What is the opposite word for truth? सत्य का विरोधी शब्द क्या जोर है? से. What is the opposite word for truth? Huh? Lie. झूठ। Praise God. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Very simple word. बहुत ही सरल एक शब्द है। The opposite word for truth is lie. सत्य का विरोधी शब्द वो lie. झूठ है। झूठ। Lie. झूठ। Who is the father of this lie? या Who is the father of this lie? झूठ का पिता कौन है? Devil is the father of lie. शैतान झूठ का पिता है। Therefore, whatever the reason may be, चाहे कुछ भी कारण हो, you will not lie. तुम झूठ नहीं बोलोगे। You will not lie. आप झूठ नहीं बोलोगे। You will not lie. आप झूठ नहीं बोलोगे। Lie is the easiest thing that we use to escape from certain problems. कई समस्या आने के समय झूठ ही हमारा बचने का एक बात है। I have worked in an English company. मैंने अंग्रेज कंपनी में That काम was किया। the biggest company in the world at that time. उस समय दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी, In India, इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी था। multinational company. एमएनसी कंपनी था। Some inquiries used to come from the superiors. और कुछ बड़े लोग अधिकारी हमसे कुछ विषयों को पूछताछ करते थे। After writing justification, और उसके कारण बताने के बाद, उसके सारे कारणों को बताने के in which बाद, there would be lot of falsehood and lie also. और उसमें कई सारे झूठ की बातें भी उसमें होगा। Those who are working in the offices, जो ऑफिस में काम करते हैं, we will be writing there. हम लिखते हैं Yours faithfully. yours faithfully, Yours faithfully. yours faithfully। Isn't that letter writing system is not there now in the office now? It is there. Okay, thank you very much. Because I am not in touch with officers now. Yours faithfully. आपका विश्वास योग्य। After writing so many long letters, बड़े लंबे लेटर लिखने के बाद, full of lies, पूरा झूठ से भरा that हुआ is है, for justification. और उसके सारे कारणों को बताकर Yours faithfully. आपका विश्वास योग्य। I said, this is the way the world is moving. इस प्रकार से संसार आगे बढ़ रहा है। This is the way the world is moving. इसी प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रहा है। But God's children are not moving in that way. लेकिन परमेश्वर के बच्चे ऐसा नहीं करना। Always tell the truth. हमेशा सत्य को बोले। Always tell the truth. हमेशा सत्य बोले। Don't hide the truth. कभी सत्य को नहीं छुपाना। Tell them, I'm sorry. और उनसे कहो मुझे This माफ करो। mistake has happened in my life. ये गलती मेरे जीवन में हो गया I है। have done this mistake. ये गलती मैंने किया है। This wrong thing has taken place in my life. ये गलत चीज मेरे से हो गया है। Always speak truth. हमेशा सत्य को बोलना। Always speak truth. हमेशा सत्य बोलना है। And in order to escape from these things, और इन सारे विषयों से बचने के लिए my master is giving one example. मेरा स्वामी एक उदाहरण देता है। Peter, पतरस, the devil has asked me to try you. और शैतान ने मुझसे मांगा कि तुम्हें The परीक्षा devil करूं। has asked me to try you. शैतान ने मुझसे मांगा कि तेरी परीक्षा Is करो। it in your Bible? The devil is asking Jesus to test that Peter. शैतान यीशु से कहता है कि पतरस की परीक्षा करो। I have prayed to God मैं प्रभु से प्रार्थना that you may किया not fail in your faith.
तुम विश्वास में न हारने के लिए मैंने प्रार्थना Where किया। is it in your Bible? Where is it in your Bible? Yes? Luke 20, 22 and 31. Luke 22 and 30. लूक 22 का 31। All of you read, open your Bible and read it. Open your Bible and read that. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. Simon, Simon, Satan has asked you to sift like a Shimon. wheat. शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। तुम लोगों को लिखा है? तुम लोगों को लिखा है? लोगों को मतलब दूसरों को भी, लेकिन ये साइमन को ही पढ़ो। సీమోను సీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి क्या तो इतना स्पीड में क्यों पढ़ता है यार? చెల్లించుటకు మిమ్మును वापस पढ़ो। సీమోను సీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మును సాతాను ఆగు అక్కడ సాతాను మిమ్మును ఆ, పట్టి గోధుమల వలె ఆ, పట్టి సాతాను మిమ్మును పట్టి ఆ? अभी दोनों फाइट करो, मैं तमाशा देखूं। Praise the Lord. Read. ഷിമോനെ ഷിമോനെ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു. तमिल में சீமோனே சீமோனே, இதோ கோதுமையை சுளையினால் பிடிக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை பிடிக்கிறதற்கு உத்தரவு சாத்தான் கேட்டுள்ளார். உன்னை உன்னை சாத்தான் உன்னை this that language is singular. உங்களை இருக்கா? ठीक है. So the इसलिए devil is asking Jesus permission. शैतान यीशु की परवानगी मांगता है। I want to sift your disciples. मैं तुम्हारे चेलों को मैं गेहूं के समान फटकने चाहता हूं। The devil has asked me permission. और शैतान ने इसके लिए मंजूरी मांगा है। But 32, I have prayed for you. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। I have prayed for you. मैंने तेरे लिए विनती की। I have prayed for you. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की నీ కొరకు వేడుకొని That your faith may not fail. कि तेरा विश्वास जाता न रहे। That your faith may not fail. कि तेरा विश्वास जाता न रहे। That your faith may not fail. कि तेरा विश्वास न जाता रहे। And after some time, और कुछ समय के बाद Jesus said, यीशु ने बोला, do not sleep. सोना नहीं, Pray प्रार्थना करो that you may not fall into temptation. कि तुम परीक्षा में न फंसे, That you may not fall into कि temptation. तुम परीक्षा में न फंस जाओ। Jesus went to the garden of Gethsemane और यीशु उस गत्समने की वाटिका में गया with 3 of his disciples. 3 चेलों को साथ लेकर। Who are those disciples? कौन कौन से चेलों को लेके गए? Simon the Peter, साइमन पतरस, James, याकूब and John. और यूहन्ना को। And he told them, you keep on praying over here. और उनसे कहा तुम यहाँ पर प्रार्थना करते रहो, I will go yonder and I will pray there. मैं थोड़ा दूर में जाके मैं प्रार्थना And करूँ। after some time praying, और कुछ समय प्रार्थना करने के बाद Jesus came to see these fellows. यीशु इन लोगों को देखने के लिए वापस आया। And they were not only drowsy, वो इतना नींद में थे, they were having deep sleep. बहुत ही भारी नींद में थे। Jesus woke them up यीशु ने उनको जगाया, and he told them, उनसे कहा pray that you may not fall into temptation. प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न फंसो। 3 times he slept, 3 बार सो गए and 3 times before the girl he failed. और 3 बार उस लड़की के सामने वो हार गया। Praise God. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। You know that girl? She was gatekeeping girl and all those things. You understand that? If you don't want to fail before a girl, यदि तुम कोई लड़की के सामने न हारना हो तो, if you want not to fail before a girl, एक लड़की के सामने न गिरना हो तो the only way is यही की मार्ग है, to keep on praying. प्रार्थना करते रहो। Not keep on mobiling. मोबाइल में बातें करना नहीं, Not keep on, what's it called? What's it called? That machine, what is that called? Computer operating.
कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए नहीं, Everybody will fail. सभी लोग उसमें हार जाएंगे। You will have temptation. तुमको परीक्षा होगा, I will have temptation. मुझे भी परीक्षा होगा। There is no human being who is exempt from this temptation. कोई भी मनुष्य ये परीक्षा से बच नहीं पाएगा। Jesus was tempted. और यीशु की परीक्षा हुआ। Is it in your Bible? Is it in your Bible? Jesus was tempted. यीशु की परीक्षा हुई, I am tempted. मेरा परीक्षा होता You है will be tempted. और आपका भी परीक्षा होगा। And the temptation is meant for everybody. हर एक व्यक्ति के लिए परीक्षा है। For everyone there is class test, हर एक के लिए क्लास टेस्ट, monthly test, मंथली टेस्ट quarterly test, और क्वार्टरली टेस्ट है and final test. और फाइनल टेस्ट। How many tests are there, man? कितने परीक्षाएं हैं? Everywhere there is test. सभी जगह में परीक्षा है। Some people want no test should be there. और कुछ लोग चाहते हैं कि कोई टेस्ट ना हो। There is test. In our Christian life there is test. मसीही जीवन में भी टेस्ट है। In order to stand, और खड़ा रहने के लिए, in order to stand, और हमको स्थिर खड़ा रहने के लिए you have to put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लेना है। What is the first armor? पहला हथियार कौन सा है? What is the first armor? पहला हथियार कौन सा है? Belt. Belt. You know, if you will see these fellows, you will find so many are having their belts. उसको बेल्ट बोलते I am हैं। a old man. I am also having a belt. मेरे लिए भी एक बेल्ट है। I am also having a belt. मेरे लिए भी एक बेल्ट है। Every student has to wear his belt. हर एक विद्यार्थी अपना बेल्ट पहनना चाहिए। What is our belt? हमारा बेल्ट कौन है? What is the name of our belt? हमारे बेल्ट का नाम क्या है? Truth. वो है सत्य। Open your mouth, man, and say that truth. वो है सत्य। Truth. सत्य। Hitherto you have been practicing falsehood. अब तक तुम झूठे काम करते थे। Hitherto you have been talking lie. अब तक तुम झूठ बोला करते थे। God's Spirit wants to warn every one of you. परमेश्वर की आत्मा हर एक व्यक्ति को चेतावनी देता है। Stop uttering lies through your mouth. आपके मुंह से झूठ बोलना बंद करें। Exaggeration is a word in English. Know that? अंग्रेजी में बोलते हैं जितना बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। Exaggeration. उसके लिए एक शब्द है बेटा. Exaggeration. बातों को जो नहीं उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। बढ़ोतरी करना है. Exaggeration. ज्यादा बोलना। Exaggeration. Is it lie or is it right? वो झूठ है कि सच है? Exaggeration. പറ മലയാളത്തിൽ പറ. Exaggeration എന്താ പറയുന്നേ? അതിശയോക്തി. സെക്രട്ടറി സാബ്, ആ വേർഡ് ശരിയാണോ? ഇന്നലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ. ഞാൻ തിരക്കിയായിരുന്നു. Praise the Lord. അതിശയോക്തി. Is it right? Is it right? His word is, what is the Tamil word? She is dreaming now. Yes? அதிக வசனிப்பு. ஏதோ உங்களுக்கு புரிஞ்சான்னு இருக்கு. Exaggeration, I know that. மிகைப்படுத்தல். மிகைப்படுத்தல் அதெல்லாம் பக்கத்தில் வந்துட்டே இருக்குது. Praise the Lord. Never do that. कभी ऐसा काम नहीं करना। Never do that. कभी ऐसा काम नहीं करे। Never do that. ऐसा काम कभी ना करे। What shall be the Hindi word for that? There is no Hindi for that. I know that Hindi will not have that. They will have only Sanskrit. Praise the Lord. Praise the Lord. Exaggeration is a lie. जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना वो झूठ है। Exaggeration is a lie. बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना गलत है। Stop doing that business. ये काम करना बंद करे। Praise the Lord. Praise the Lord. Truth. Guard yourself with the, that's called buckled, huh? Buckled round your waist. एक सत्य से अपनी कमर को कस कर। With the breastplate of righteousness in place. और धार्मिकता की झिलम पहन कर। Breastplate. झिलम। Breastplate. झिलम। What is that breastplate? नीति अनु मयमरु। तुम हिंदी तेलुगु बराबर पढ़ो ब्रदर. नीति अनु मयमरु। నీతియను मयमरु। మహిమను మహిమలు मयमरु। మరవు మరవు कुछ भी हो. It is one of the most important part of our body is our chest. और हमारा शरीर का सबसे मुख्य भाग हमारा छाती है। Very important thing. बहुत ही मुख्य बात है छाती। And the enemy will send his arrow of light, ஒளியம்பு.
और arrow of light. शैतान अपने तीरों को हमारे पर मारते If रहेगा। it falls over here, यदि हमारी छाती में लग जाए we will तो be dying there. तुरंत मर जाएंगे। What is that? यहाँ How क्या to लिखा? protect that? उसको कैसे संरक्षण देना है? Righteousness. धार्मिकता। Righteousness. धार्मिकता, I have told you what is the meaning of righteousness. मैंने आपको पहले बताया कि धार्मिकता क्या Many होता है। time I have repeated that. कई बार मैंने दोहरा कर बोला है। Righteousness is coming from a right. और धार्मिकता धर्म के काम मतलब सही काम से आता है। Righteousness word is coming from right. धार्मिकता मतलब सही काम करना। From right only righteousness comes. और सत्य सच्चाई से वो शब्द आता है। Thinking right. सही सोचना Desiring right. और सही बातों के बारे में इच्छा करना। Hearing right. सही सुनना, Speaking right. सही बोलना, How many rights I have said? Thinking right. सही सोचना Desiring right. और सही बातों को कल्पना करना And speaking right. और सही बोलना Hearing right. और सही बात को सुनना How many things I said? 4. And doing right. और सही काम करना And walking right. और सही चलना। All things shall be right and right and right. Open your सब कुछ mouth and say सही, that. सब कुछ सीधा और सही होना चाहिए। Right and right and right and सब right कुछ and सही right. और सीधा होना चाहिए। Always do right. हमेशा सही काम करें, Always do speak right. हमेशा सही बोले, Always hear the right things. हमेशा सही बातों को सुने, Always think right things. हमेशा सही बातों को मन में रखें Always desire right things. और सही विषयों का इच्छा करें Always walk in the right ways. और सही मार्गों पर चले। Hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's over? It's over. I think it's over. Very fast. 14. 15. Feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। Peace. मेल, Peace. मेल, Peace. शांति, Peace. शांति, Inward peace. अंदर शांति होना चाहिए Practicing peace. और ऐसे शांति होना चाहिए। Living peacefully. शांति से जीना। Praise God. Lord, Peace. शांति से। How many of you people can speak to all the people right now here? Can you? Say it in the mic. कितने लोग यहाँ पर जो आए आपके बारे में बोलो पहले। सभी के साथ बात करने के लिए योग्य समझते हैं? Can you speak all the people here? Say it in the mic. Okay. What about neighborhood? What about relatives? Say louder. Your mama, your chinna nana, pedda nana, all of them. With this younger brother, are you at peace? Sure? Open your mouth and say that. Hallelujah. 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 Some people are so good in the family, कुछ लोग परिवार के अंदर इतने अच्छे हैं, but when they go out, लेकिन जब बाहर जाते हैं they are wild dogs. वो जंगली कुत्ता बन जाते हैं, They are wolves. They are wolves. लोमड़ी बन जाते हैं। Wolf. Wolf, you don't know? Yeah. That ferocious, naughty animal, ferocious. Praise the Lord. Peace. शांति, Peace. शांति, Peace. शांति। Will you open your mouth? Peace. 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 Inwardly you must have peace. आपके अंदर शांति होना You चाहिए must be peace with God. और परमेश्वर के सन्मुख में भी मेल होना चाहिए। Where you live, जहाँ पर रहते हो you must be at peace with everybody. हर एक व्यक्ति से शांतिमय जीवन But बिताए। certain people are so notorious. लेकिन कुछ लोग इतने खतरनाक लोग हैं, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, The blood of fight is flowing in their bodies. उनके अंदर लड़ाई का खून चलते रहता है। It can be from the father या तो वो पिता की ओर से आता or है it can be from the mother. या मम्मी की ओर से आता है। Fight, हमेशा झगड़ा, fight, झगड़ा, and fight. झगड़ा They read fight. और झगड़ा पढ़ते They हैं, see fight. झगड़ा को देखते They हैं, speak fight. झगड़ा के बारे में बोलते They हैं create fight. और झगड़ा को उत्पन्न करते हैं।
The kingdom of God is. परमेश्वर का राज्य, The kingdom of God is. परमेश्वर का राज्य Say louder. Is not in eating meat and drink. परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं But है, what is there? पर क्या है? Righteousness, peace, and joy through the Holy Spirit. Righteousness. धार्मिकता. How many churches are having cases? How many churches are having cases? कितने कलीसिया में केस है, How many fights are there? कितना झगड़ा होता है. This man will not speak to that fellow. ये भाई दूसरे व्यक्ति से बात नहीं That करेंगे, fellow will not speak to this fellow. उस भाई दूसरे भाई से बात नहीं करेंगे, That fellow will not speak to that और fellow. वो भाई दूसरे भाई से बात नहीं This करते. woman will not speak to that woman. ये बहन दूसरी बहन से बात नहीं करते, That woman will not speak to this woman. और वो बहन दूसरी बहन से बात And नहीं that करती, woman will not speak to that woman. और दूसरी बहन से बात नहीं करती है. They are the incarnation of fight. वो झगड़ा का अवतार है. Papas. वे लोग झगड़ा के अवतार है, Once more. और वे लोग झगड़ा के अवतार है. They are the incarnation of that fellow is. They are the incarnation of fight. वे लोग झगड़ा के अवतार के रूप में हैं. They are the creators of fight. वो झगड़ा को पैदा करने वाले लोग हैं. They live like monuments of a fight. वो उस झगड़ा के एक खंबा के समान है. Praise the Lord. Praise the Lord. Now what is the 16th verse? There is not. Only 15. It is finished. In addition to all this. और इन सब के साथ It is not finished. पूरा नहीं हुआ है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. What do we have? हमारे पास क्या We है? have struggle. हमारे लिए संघर्ष. We have हमारे लिए क्या है? struggle against the devilish powers. और शैतान के सामर्थ्यों के विरुद्ध में What संघर्ष. do we have? हमारे लिए क्या है? We have to fight for the faith. विश्वास के लिए लड़ाई करना है. Stand for the Christian life. मसीह जीवन के लिए खड़ा रहना है. In order to stand in that trial, और उस परीक्षा में खड़े रहने के लिए the Holy Spirit is asking us to take on the whole armor of God. पवित्र आत्मा हमसे यह चाहता कि परमेश्वर के सारे हथियारों को हम पहन ले. Praise the Lord. Praise the Lord. Keep on there. No failure. No failure. कोई हरावट नहीं. No defeated man can ever stand before God. कोई हारा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने कभी खड़ा नहीं रह That's पाएगा. why to the churches in the New Testament God says, इसलिए नया नियम की कलीसिया से परमेश्वर बोलता है. in the second and third, you may have to face certain walls in your life. और इस सप्ताह में आपके जीवन में कई युद्धों को सामना करना पड़ेगा. And in that war you shall not fail. और उस युद्ध में आप हारना नहीं In चाहिए. order the Lord to answer your prayers, आपके प्रार्थनाओं को प्रभु सुनने के लिए you have to overcome. आपको Open जयवंत your होना, mouth and say, overcome. आपको जयवंत होना पड़ेगा. Overcome. जयवंत होना है. Open your mouth and say, overcome. मुंह खोलकर बोलिए जयवंत होना Young है. man, the word of God says, overcome. जवान परमेश्वर कहता है कि जय पाओ, Overcome. जय पाओ, Overcome. जय पाओ. Commit your life and you start praying. आपके जीवन को समर्पण करके प्रार्थना कीजिए. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Victory. Victory. जय. Vijayvant Jivan. Victory. विजयवंत जीवन. God says, परमेश्वर बोलता है you have to overcome. आपको जय पाना पड़ेगा. Straighten your head. Overcome. जय पाओ, Overcome. जय पाओ, Overcome. Say louder. Overcome. जय पाओ, 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 Overcome. जय पाओ. Open your mouth and say this word louder. आपके मुंह खोलकर बोलिए, Overcome. जय पाओ, Overcome. जय पाना, Overcome. जय पाओ. आंख बंद करके बोलो victory. विजयवंत जीवन, Victory. विजयवंत जीवन, Victory. विजयवंत जीवन, Victory. विजयवंत जीवन. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore.
Jesus Christ, God's only Son, for the battle anyone will not be defeated anymore. Will not be defeated Open your mouth. anymore. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Jesus Christ was only Son, for the battle anyone will not be defeated anymore. Will not be defeated anymore. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Glory. Christ has only Son, for the battle anyone will not be defeated anymore. Will not be defeated anymore. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Jesus Christ was only Son, for the battle anyone will not be defeated anymore. 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 God has provided every armor to protect our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन को संभालने के लिए परमेश्वर ने सारे हथियार हमें दिया है। It is for us to put on the whole armor of God, ये सारे परमेश्वर के हथियार बांधना ये काम हमारा है, so that you can stand firmly. ताकि आप स्थिर खड़ा रह सको। Thank the Lord for the good words, good advice God has given us this morning. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ये सारे अच्छे सलाहों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। से कहो, Lord, I want to be have a victorious life. प्रभु मैं विजयवंत जीवन बिताना चाहता हूँ। Grant me a life of victory. मुझे एक विजयवंत जीवन चाहिए। प्रभु जी, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। संघर्ष, लड़ाई हमारे सामने है। हम जानते हैं लगातार शत्रु हमसे लड़ता ही रहता है। प्रभु, तेरी दया चाहिए, तेरे भलाई चाहिए। हफ्ता पूरा एक victorious life we want, Master, from you. With your help we can overcome the temptations. With your help we can, Master, overcome every trouble that we will be facing. Father, we want such a life in our life through this week. Protect everyone. Provide for every needs of our life, dear Lord. You're all sufficient. You're all powerful. Therefore, thank you, Master. With you, we can have victory. ये पूरा हफ्ता हमें संभाल, हमें आगे ले चल, मदद कर। आदर, महिमा, गौरव तेरे लिए यीशु मसीह के महान नाम में। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ बनते रहे। हालेलुया, हालेलुया। Voice meeting at 5 p.m. today. Voice meeting. आनोक, तुम्हारे कसन ब्रदर को मुझे मिलना है, उनको बोल देना मुझे मिलना है, PSL वाला। Thank you. May God bless you.